Hello friends, welcome back. In today's lecture, we are going to discuss on the topic biodiversity and its types. Biodiversity is one of the important as well as the entertaining topic out of the other part of this curriculum. So before moving towards the actual topic, we should discuss very shortly about the biodiversity. My friends, we know that in this universe there are the number of planets are present, but out of these planets earth is considered as the most beautiful planet. Earth is beautiful because of the presence of the biodiversity as well as other natural resources on this planet. Our earth is having the water, we have the mountains, we have the plants, we have the animals, we have the other different types of birds. That's why we are the beautiful than as compared to the other planets. So let's move toward the actual topic, the definition of the biodiversity. Biodiversity is nothing but the variety as well as the variability found among the species in a particular area or in a particular population of the species. There is a variety or the variabilities among the species is found. There are the different types of organisms, different sets of plants are present on this planet. When we consider about the plants, there are different types of plants. Some plant gives the flowers, some plant gives the fruits, some plant gives the medicines. There is variety of the plants. In animals also, some animals are the herbivores, some are the carnivores. There are insects are also present. Birds also there. There are different types of different colors, different size. Birds are also exist on this planet. Means there is a variability present in the species which are exist on this planet, and that is known as a बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को जैव विविधता कहा जाता है. जैसे कि जैव विविधता इस शब्द को अगर विस्तार से देखा जाए तो जैव विविधता मतलब इस पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो कोई भी लिविंग एनिमल और प्लांट प्रेजेंट है उसके अंदर हमें विविधता देखी जाती है. जैसे कि एनिमल के अंदर कुछ मांसाहारी प्राणी हैं, कुछ शाकाहारी प्राणी हैं. इसका मतलब एनिमल्स के अंदर वैरायटीज है. प्लांट्स के अंदर भी कुछ प्लांट्स फ्लावर्स देते हैं, कुछ प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं और कुछ प्लांट्स दवाई देते हैं. इसका मतलब प्लांट्स के अंदर भी वैरायटी आ गई. बर्ड्स के अंदर भी डिफरेंट कलर के बर्ड्स है, डिफरेंट साइज के बर्ड्स है, वो भी हमें पाए जाते हैं. इसका मतलब जैव विविधता, जो कोई भी सजीव, जितने भी सजीव प्राणी, जितने भी सजीव प्लांट्स ये पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो कुछ भी विविधता देखी जाती है उससे हम लोग जैव विविधता बोलते हैं. The scientist Edward Wilson in 1986 he defined the term biodiversity. He also classified the biodiversity in the form of its genes, then species and the ecosystem. Or simply, the biodiversity is divided into three types, or it is classified in the three types: species diversity, genetic diversity and the ecosystem diversity. So one by one we will discuss about it. The first one is the species diversity. In the species diversity, friends, we know that there are different types of communities of animals are there. In that communities there are different types of species can be observed. For example, in the forest ecosystem, there are n number of mammals are present, n number of amphibians, n number of birds, n number of reptiles are also exist in the forest ecosystem. Means there is a variety as well as the variability found among the animals is known as a species diversity. स्पेसीज के अंदर जो कुछ भी वेरिएबिलिटी और द वैरायटी हम लोग देखते हैं उसे हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि अलग अलग कम्युनिटी में, जैसे कि फॉरेस्ट एक जंगल की कम्युनिटी है, उसके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो शाकाहारी है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं. उसके अंदर हम लोग रेप्टाइल्स भी देखते हैं जैसे कि सांप है और दूसरे एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है. ये एक ही कम्युनिटी के अंदर आने वाले अलग अलग प्रजाति है एनिमल्स के और प्लांट्स के भी, उसे हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं.
अब नेक्स्ट पार्ट है उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी। इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, as word itself indicates that on the basis of the genetical material present inside the animal or the plant, they look differ than each other. My friends, we know that every plant as well as the animal group having their specific genetic material inside the body. That's why they look differ than each other. In our family also, there are 2 or 3 brothers or sisters are there. Whether we belongs to the same family, but we look different than each other. In animals also, whether the species is same, but due to presence or the variability in the genetic material in the body of that particular animal and the plant, they look different than each other. For example, a dog. I will give the 2 examples, one animal and one plant. Firstly, of the example of the animal, there is a dog. There are n number of the species of the dogs or the breeds of the dog animal we can observe. Some dogs are very short in size, some dogs are very large in size, some dogs having the large hairs on their skin. That's why they look different than each other. In dog, there are few examples. Pomeranian, which having the large hairs on their skin. Then Great Dane, having the large size. Then puppies, pug we can say that. Vodafone dog, simply. He's looking very cute and very short in size, isn't it? The species is same, dog, but due to the different or the variability in the body on the genetical material, they look differ than each other. In plants also, we take the example of the mango. In summer season, every one of us eats the mango and everyone likes the mangoes because the mango is the king of all fruits. We know that. When we go to the market, there are different varieties of the mangoes are available. Hapus amba, we said hapus mango, then lagda, then dasheri. Different types of mangoes species are present. The fruit is mango, but due to the genetical material present in that fruit, they looks differ on the basis of its taste, on the basis of its size. Small as well as the large size mangoes are available. Got it? Means the species is same, but due to the genetical material or the variability in the genetical material in that plant or in that animal, they looks differ than each other. And on that basis, the Edward he's classified the diversity in the form of genetical diversity. In the genetical diversity, every species or the animals in a particular species is looks differ than each other. Then the last type, that is ecosystem diversity. Ecosystem diversity is the third type of the biodiversity. Ecosystem. The word ecosystem was first coined by the scientist A.G. Tansley in 1935. He defined the ecosystem that the ecosystem is a basic functional ecological unit in which biotic and the abiotic components interacts with each other to produce the exchange of material, and from their exchange a system is formed. That system is known as an ecosystem. It says that there are 2 types of components are present on this planet, either living or either non-living component. That living and non-living components, they interact with each other to produce the exchange of material. We know that every living organism is depends on the non-living components, either directly or indirectly, but it depends on the abiotic components. Okay, so ecosystem is classified into 2 types, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. The ecosystem which exist on the land surface are considered as a terrestrial ecosystem, and those ecosystem which initiates or which starts from the aquatic life is known as a aquatic ecosystem. In the terrestrial ecosystem, again there are the varieties of the ecosystem: grassland ecosystem, forest ecosystem, cropland ecosystem. These are or the desert ecosystem. These are the examples of the terrestrial ecosystem. And the pond ecosystem, lake ecosystem, estuary ecosystem, marine ecosystem,
All these are the examples of the aquatic ecosystem. Now, the richness of the life or the richness of the plants as well as the animals present in that particular ecosystem is known as the ecosystem diversity. For example, in aquatic ecosystem, there are two types of ecosystem, marine ecosystem and as well as the freshwater means river ecosystems are there. Animals present in the marine ecosystems are different one, as well as the animals as well as or the plants present in the river ecosystems are the different. Whether they belongs to the aquatic, their habitat is the aquatic surrounding, but they are different, or the variability of the animals is different in that two types of ecosystem. In terrestrial ecosystem also, those animals, those plants present in the marine, in the desert ecosystem, present in the forest ecosystem, or present in the grassland ecosystems are different one. In the forest ecosystem, the animals or the plants included in the forest ecosystems are different one, and the plants and animals present in the grassland ecosystems are the different one. Means on the basis of the richness of the plants as well as the animal in an ecosystem, the ecosystem diversity is there. So my friends, these are the three types of the biodiversity: species diversity, genetic diversity and the ecosystem diversity. एक बार मैं हिंदी में भी बोलना चाहूंगा कि जैव विविधता ये 3 पार्ट्स के अंदर उसको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि स्पेसीज डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। स्पेसीज डाइवर्सिटी के अंदर जो कोई भी स्पेसीज है, एनिमल्स की या प्लांट्स की स्पेसीज है, उसके अंदर वैरायटीज पाई गई है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था। जेनेटिकल डाइवर्सिटी में स्पेसीज अगर सेम होंगी फिर भी एक ही स्पेसीज के अंदर और एक ही टाइप की स्पेसीज के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंटली लुक्स में नजर आते हैं। मैंने उसके एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखा है। एक एग्जांपल मैंने रखा था डॉग्स का। कुत्तों के अलग अलग प्रजाति, अलग अलग ब्रीड्स हमने सराउंडिंग में देख सकते हैं। जैसे कि कुछ कुत्ते होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं जो हाइट में साइज में बड़े होते हैं, कुछ कुत्तों के स्किन के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं। उसका मैंने एग्जांपल दिया, पोमेलियन जो कुत्ता होता है उसके स्किन के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं। ग्रेट डेन जो कुत्ते की ब्रीड है उसके अंदर कुत्ता जो होता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में तीसरा मैंने एक डॉग का ब्रीड बताया जो पग है, वोडाफोन का कुत्ता है, जैसा मैंने आपको बोला था कि वो कुत्ते की हाइट बहुत छोटी होती है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, वो प्रजाति कौन सी है? डॉग्स की ब्रीड है, लेकिन उसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल के चेंजेस रहने की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंस दिखते हैं। मैंने मैंगो का भी एक एग्जांपल आपके सामने रखा है कि मार्केट के अंदर जब हम मैंगो परचेस करने के लिए जाते हैं वहां पर मैंगो की अलग अलग प्रजाति हम लोग देखते हैं। हापुस आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, ठीक है ना। उसके साइज के हिसाब से वो छोटा या बड़ा होता है, कलर के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से उसके अंदर वैरायटीज पाई गई है। In earlier, there is a science is developed that genes from one particular animal or the one particular species can be transferred from one animal to the other animal, from one plants to the another plants in the biotechnological science. In biotechnological science एक ऐसा साइंस जो डेवलप हुआ है जिसके अंदर हम एक प्रजाति के अंदर से जीन्स निकाल कर दूसरे प्रजाति के एनिमल्स के अंदर या दूसरे स्पेसीज के अंदर हम लोग उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या वो जो कुछ भी जीन्स है वो दूसरे एनिमल्स के अंदर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गार्डन के अंदर अगर आप गए होंगे तो एक रोज का प्लांट है, रोज के अंदर एक अलग अलग कलर के रोज हम लोग देख सकते हैं। कुछ गुलाब, एक ही प्लांट्स के अंदर लाल कलर का गुलाब, सफेद कलर का गुलाब या पिंक कलर का गुलाब एक ही प्लांट्स को आने वाले हम लोग देख सकते हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, isn't it? So this is about the plants species diversity and the genetic diversity. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में हमने भी अभी डिस्कस किया है कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स परिसंस्था में आने वाली जैव विविधता। परिसंस्था ये 2 टाइप की है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर जो कुछ भी परिसंस्था है उसके अंदर आने वाले एनिमल्स और बर्ड्स डिफरेंस होते हैं, और एक्वेटिक जो पानी के अंदर जो कोई भी परिसंस्था है उस परिसंस्था के अंदर आने वाले
एनिमल्स और द प्लांट्स वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मराइन इकोसिस्टम, मैंने समंदर में कहा गया कि समंदर में जो कोई भी जीव प्रेजेंट है, जो कोई भी जीव है समंदर के अंदर, वो अलग होते हैं और रिवर के अंदर आने वाले जीव अलग होते हैं। इसी तरह से तो इकोसिस्टम में आने वाले एनिमल्स को डिवाइड किया गया है इकोसिस्टम के माध्यम से, उसे हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ विद दिस पॉइंट वी कंक्लूडेड आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी as well as the types of biodiversity. In this topic we discuss the definition of biodiversity as well as its types on the basis of species diversity, genetic diversity and ecosystem diversity. In next lecture we will discuss about the threats to the biodiversity, loss of the biodiversity. Okay, thank you very much.